friends, hello, I am Anup sir. First of welcoming all students in our class in standard 8th. Today we are going to start our new chapter, chapter number 11, force and pressure. In the previous lecture we have to completed chapter number 10, reaching the age of the adolescence. Now first of present in our mind, which is called the force. A push or a pull that changes or tends to the change the state of rest or uniform motion of an object or change its direction or shape is called the force. Which is called the force? जब भी आप क्या करते हो, पुश करते हो, पुल करते हो, then the change the place of the object or change or tends to change the state of the rest or uniform motion of an object change its direction or shape is called the force. A force arise due to the interaction between two objects. force कब arise होता है? between जब interaction होता है two objects के. force has magnitude as well as direction. force has a magnitude as well as direction, so it is a vector quantity. force कैसी quantity है? vector quantity है, because they have to need magnitude with direction, so force is a vector quantity. A change in the speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its states of motion. तो स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन का, both imply change in its states of the motion. Force acting on an object may cause a change in its state of the motion. जब फोर्स ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, अट्रैक्ट होता है, एक्ट करता है, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है और उसका शेप चेंज होता है. अब फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट. Generally there are two types of the force. First is the contact force and another is non-contact force. Some force can be act without being contact with it. Types of the force, generally there are two types of the force. First is the contact force and another is the contact force. There are some branches of the contact force. The force act on body when the source of force in actual contact with the body. contact force में क्या हो रहा है, जब force act हो रहा है तो कौन बॉडी से कांटेक्ट हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट की बॉडी है उससे कांटेक्ट हो रहा है. जनरली थ्री टाइप्स ऑफ द कांटेक्ट फोर्स. फर्स्ट इज द मस्कुलर फोर्स, अनदर इज द मैकेनिकल फोर्स एंड थर्ड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स. विच इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के मसल्स से जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स, जैसे कि आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, वेट लिफ्टिंग. सेकेंड इज मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन. मशीन के बाद जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स द अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट में जो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. जो मोशन के अपोज में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? विच कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, force which do not involve physical contact between two bodies on which they act. टू बॉडीज पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसमें दोनों का क्या है, बॉडी कांटेक्ट नहीं होता. दिस इज नोन एज द नॉन कांटेक्ट फोर्स. जनरली थ्री टाइप्स ऑफ द नॉन कांटेक्ट फोर्स: मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स. विच इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. A magnet exerts a non-contact force on objects made of iron, steel, cobalt और nickel. जो मैग्नेट है किस किस पे एक्ट होती है? There are act on three metals: steel, cobalt and nickel. ओके, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कंटेनर हैं उसको लिफ्ट करने के लिए किसका यूज होता है? मैग्नेट का. ओके, किसका यूज होता है? मैग्नेट का. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. The force which result due to the repulsion of the similar charge or the attraction of the opposite charge. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है? जब सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्सन हो. सिमिलर चार्ज के बीच, between the similar charge have repulsion and between the opposite charge have a attraction is called the electrostatic force. Third one is a gravitational force. The force that exists between two mass because their mass. Okay,
between two mass के बीच जो force लगता है means that is called the gravitational force, means G is equal to K m1 into m2 upon r square. It is called the gravitational force, means product of the mass of the two body is proportional to the and inversely proportional to its distance, square of its distance. Okay, it is called the gravitational force. Force per unit area is called the pressure. Which is called the pressure? Force per unit area is called the pressure. What is the formula of pressure? P is equal to F upon A. A means area, F means force. Force per unit area is called the pressure. Unit of the pressure is Pascal. What is the Pascal? Is the unit of the pressure. Okay. Liquid and gaseous exert pressure on the walls of their containers. The pressure exerted by air around us known as atmosphere pressure. Okay. Generally today we are going to discuss about the force and the pressure. Generally there are two types of the force, contact force and the non-contact force, and generally three types of the contact force. That one is the muscular force, mechanical force and the frictional force, and generally three types of the non-contact force: magnetic force, electrostatic force and gravitational force. If anybody have any query regarding the introduction of the force and pressure, then ask me in comment box. Have a nice day.